So hi everyone, this is your anchor Lakshmi, and once again I would like to stretch a very warm welcome you all in our today's wonderful session. So yeah, now we will be starting our session in 10 minutes, but before that I'm here to talk with you guys. So मैं यहाँ पे आप लोगों से बातें करने आई हूँ. So firstly we will start with a hi and hello. So हमारे जितने भी participants यहाँ पे हैं, so सभी को मेरा hi and नमस्कार everyone. So आप सभी के सामने आप सभी से भी थोड़े से हाई एंड हेलो आ जाए, then we'll be interacting with each other, थोड़ी सी बातें करेंगे हम लोग. So come on everyone, I'm waiting in the chat box. आप सभी के हाई एंड हेलोस के लिए मैं वेट कर रही हूँ चैट बॉक्स में. So फटाफट हमारे जितने भी एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं सभी लोग हाई एंड हेलो पोस्ट करेंगे चैट बॉक्स में. Okay, Punit ma'am is really very active participant. Oh wow. Now I can see our chat is full of hi and hello. Wow. क्या बात है. Excited to learn from you. So Sudha ma'am, I'm not your trainer. मैं आपकी trainer नहीं हूँ. I'm just anchor. So मैं यहाँ पे बस आप उनसे बातें करने आई हूँ. So हमारा session जो होगा वो हमारा 10 minutes बाद start होगा. बट उससे पहले मैं यहाँ पे आप लोगों से थोड़ी बातें करने आई हूँ ताकि ना हमारा एक अच्छा सा कनेक्शन बन जाए. हम बस ऐसा ना लगे आप लोगों की हाँ हम आके बस सेशंस अटेंड करके चले जा रहे हैं. आई डोंट वांट दैट, यू नो. आई जस्ट वांट कि हमारा कनेक्शन अच्छा हो जाए और पंखुरी के साथ आप एकदम फैमिली जैसा फील करें. दैट्स व्हाई आई यूज्ड टू कम, और इसलिए मैं आज यहाँ पे इस सेशन में भी आई हूँ. सो हमारी ट्रेनर अभी कुछ समय में आएंगी. सो वी आर हियर. मैम हूज टुडे ट्रेनर. सो सलोनी आप लोगों को बताइए हमारी ट्रेनर आज की कौन है. एंड शी इज योर होस्ट सलोनी. So Saloni, can you say a hi to everyone? They are waiting. Yes. So, hi everyone, this is Saloni, your host from Team Pankhuri, and I hope you all are doing absolutely great. So, today Dakshita will be our trainer. She will be the one to teach us all about the macarons. So, आज का जो सेशन होगा उसमें हमारी जो ट्रेनर होगी उनका नाम है दक्षता, and वो हमें सिखाएंगी सब कुछ macarons के बारे में, and I hope that you all are really excited for it. Yes, so I think everyone is excited, but सभी लोग अपनी excitement ना थोड़ी अपने words में show करेंगे. Everyone have to show their excitement in their words in the chat box. So I want to see some excited words from everyone. Come on, everyone. Show some excitement for today's session. Like how much you are excited. आप कितने ज़्यादा excited हैं आज के session के लिए. Harpreet ma'am, not only ये, you know, I want to see some excited words. Oh wow, I can see now. So excited. And you know, Anna ma'am, that's exclamation sign. Really, I feel really good when I see that. Super excited. Wow. Aha, Rohi ma'am is super excited. Hooray. Wow, yaar. So Saloni, I think we have really very excited participants here. So I can see hi from CC. That was very typical name to take. Okay, Alipia ma'am is saying super excited. Okay, so now Saloni, I'm very clear that we have super excited participants here. So Okay. before we start this session, I was thinking, looking beautiful, yeah. Thank you so much, Ruma ma'am. Thank you. So I think कि हमारे जितने भी participants हैं ना, they all are very beautiful, and because of you, आप लोग इतने अच्छे से बातें करते हैं मुझसे. That's why मेरे चेहरे पे इतनी बड़ी smile आती है, and इससे थोड़ी सी beautiful मैं लग जाती हूँ. So hello भावना मैम, hi. यप्पी, क्या बात है. ओके, सो व्हाट वाज आई थिंकिंग ना कि हम थोड़ी सी जब तक हमारी ट्रेनर स्टार्ट नहीं करती सेशन तब तक आई वाज थिंकिंग कि हम थोड़ी सी बातें करते हैं, यू नो, वुमेन एम्पावरमेंट पे. हेलो निकिता मैम, क्या बात है. निकिता मैम लगता है मुझे पहले से ही जानती है, एंड शी इज लाइक हाय लक्ष्मी. वाओ, वेरी वेरी एक्साइटेड. ओके, सो आई वाज थिंकिंग थोड़ा सा हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट पे बात करते हैं. लाइक यू नो कि वुमेन एम्पावरमेंट हमारे इंडिया के लिए कितना ज्यादा जरूरी है आज के टाइम पे. मतलब काफी लोग ऐसे हैं, काफी वुमेन्स ऐसी है जो काफी वर्क कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, बट अभी भी कुछ कुछ हमारे यू नो इंडिया में कुछ कुछ ऐसे सिटीज हैं जहाँ से वुमेन अभी तक वर्क अच्छे से नहीं कर पाते. लाइक उनको घर में नहीं करने दिया जाता है, ऐसा कुछ होता है. सो हमारा जो ऐप है पंखुरी, वी वांट कि हमारे ऐप से सभी जितने भी हमारे इंडिया के जितने भी पार्ट से वुमेन है सभी लोग कुछ ना कुछ ऐसे सीखें, एंड उससे फिर अपना एक अच्छा वर्क स्टार्ट कर सके, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके. सो आई वांट टू नो फ्रॉम आवर पार्टिसिपेंट्स कि पंखुरी आप सभी को कितना ज्यादा हेल्प करता है, यू नो, आप सभी के मतलब वर्क को स्टार्ट करने में या फिर किसी भी चीज को सीखने में. सो आई वांट टू नो फ्रॉम आवर पार्टिसिपेंट्स, प्लीज लेट मी नो. Come on. I hope कि मेरी बातें जो है वो क्लियर होंगी सभी को. Yeah. And there was one question coming. So the thing is, somebody was asking that why the classes on Pankhuri are so cheap. So the reason why we have kept the pricing in this way is because we want that maximum people here could learn
and it should not be like so expensive that you want to learn something but you're not able to because of the money. That is why we want to keep everything simple, but we want to keep the quality updated, the best quality we can get, and we want to keep it at a price point that everybody could join here. So this is the reason why we try to get everything in the most affordable price without compromising on the quality that you will get. तो हमारे जो प्राइसेस होते हैं वो इतने कम इसलिए होते हैं ताकि जो भी हमारे ऐसा जरूरी नहीं है कि सबके पास सब लोग बहुत एक्सपेंसिव कोर्सेज ले सकें 4,000 5,000 के। तो हम लोग ये ट्राई करते हैं कि हम वही सेम क्वालिटी जो आपको शायद 6-7 हजार के कोर्सेज में मिलेगी, वो सेम क्वालिटी इनफैक्ट उससे बेटर क्वालिटी हम आपको ला के दे सकें, एंड एक ऐसे प्राइस पॉइंट पे ला के दे सकें कि वो सब लोग सीख सकें। बिकॉज सबको शौक होता है कुछ ना कुछ सीखने का, सबका कुछ ना कुछ होता है, एंड देन अगर उसके बीच में पैसे की प्रॉब्लम हो तो वो तो मतलब क्या ही होना चाहिए, ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम लोग ट्राई करते हैं कि हर चीज बिल्कुल यू नो एक अफोर्डेबल प्राइस पे रहे। एग्जैक्टली सलोनी, मतलब मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। लाइक मैं अभी पंखुरी में 2 मंथ से वर्क कर रही हूँ, बट इससे पहले जब मैं वर्क नहीं कर रही थी, एंड देन आई वाज लाइक मुझे नेल आर्ट में बहुत इंटरेस्ट था। लाइक आई वाज वेरी वेरी इंटरेस्टेड इन नेल आर्ट, बट बिकॉज ऑफ मनी, in our Raipur, like I'm from Raipur, Chhattisgarh, so in our Raipur nobody was providing class below 10,000. So everyone was saying like we will give you class, but that will be of 10,000, extension and all. बट व्हेन आई सॉ पंखुरी ना कि वो सिर्फ और सिर्फ यार 399 में हमें पूरा बेसिक टू एडवांस क्लास करा रहे हैं। यस लक्षिता मैम, डोंट वरी, वी विल बी डूइंग इन बोथ द लैंग्वेजेस, एंड राइट नाउ वी आर नॉट teaching you anything, we are just conversating with each other. So we will try to conversate with both languages, okay? I'm impressed for you with your great thought. Yes, Chaitanya ma'am, we just try कि हमारे जितने भी इंडिया के बाद से जितनी भी वुमेन्स है, they all try to work, they all try to learn, but please, मतलब ऐसा होता नहीं कि कभी, जैसा कि सलोनी ने बोला, कि कभी भी पैसे की वजह से ऐसा ना हो कि हम नहीं सीख पा रहे। So we want कि हम पैसे की वजह से आप ऐसा कभी ना हो कि आप नहीं सीख पाए। We want कि हम अफोर्डेबल प्राइसेस में आपको सभी चीजें सिखाएं। So that's why, और सलोनी ने इसका आंसर आप सभी को दे ही दिया था। Your thoughts are incredible. Thank you so much. Yeah. So where was I? I was sharing my, Lakshmi. Yeah. I think Dakshita is here. Okay. Dakshita, are you here? Can you just? Yeah, I can see her. I thought listening to the entire conversation. So. Acha. Can we start with the class then? Definitely. Yeah, I think everyone is ready for today's session. So guys, we will be talking in maybe the last of the session. So right now your wonderful trainer is here, Dakshita. So Dakshita, can you say a hi to everyone? They were waiting for you for last 10 minutes. Hi guys, I am so sorry today's session got a little delayed from my end. But we can start now. So yes, yeah. So going now. So right now your host Saloni is here and your trainer is here. So bye everyone from my side, and we'll meet in the last of the session. Hi. Okay. Hello guys. Everyone. Okay, so Dakshita, before starting, just let me give them a little brief about it, and then we can start. Okay. So hi guys, this is Saloni, your host from Team Pankhuri, and this is Dakshita, our trainer. She'll be the one to teach us all about it. So before going to the class, there are just few things I want to tell you all about, and then we will move to the class. So the very first thing is that you're going to get the PDF of the class, and the PDF has been already uploaded on the app. So don't worry. Once the session will be over, I will tell you in the end of the session that where you will be able to find the PDF. तो आपको ये जो सेशन है उसका पीडीएफ भी मिलेगा, मतलब जो रेसिपी है उसका फुल आपको एक पीडीएफ मिलेगा, एंड वो पीडीएफ जो है वो ऑलरेडी अपडेट कर दिया है हम लोगों ने ऐप पे, एंड वो आपको कहाँ पे मिल जाएगा मैं आपको ये सेशन के एंड में बता दूंगी. After that, you're also going to get the recording of the session, and you're going to have lifetime access to it. So if in case you forget anything or you get confused between anything, please don't worry. You will have the recordings so that you don't get confused between anything here.
सो आपको जो भी सेशन है उसकी पूरी रिकॉर्डिंग मिलेगी, वो रिकॉर्डिंग ऐप पे अपलोड हो जाती है। मैं आपको सेशन के एंड में बताऊंगी कि आपको रिकॉर्डिंग्स कहाँ पे मिल जाएंगी, तो आप तब चेकआउट कर सकते हैं। ओके, also all the products that Dakshita will be using have already been linked on the app, so don't worry, you do not have to go anywhere, you will find everything on the app. Okay, so जो भी चीजें दक्षता यूज करेंगी उनकी सारे के सारे प्रोडक्ट्स भी अपलोडेड हैं ऐप के ऊपर, तो मैं आपको सेशन के एंड में दिखा दूंगी कि वो सारे प्रोडक्ट्स भी आपको कहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, and also for the certificates and everything we will be dealing about it in the end of the session. जो भी certificates and सब कुछ है वो सारा का सारा आपको सेशन के एंड में मैं बताऊंगी। तो अभी we are just going to concentrate on learning macarons because that is a very difficult recipe to learn. Okay, so अभी हम सबसे पहले सिर्फ macarons के ऊपर concentrate करेंगे because macarons थोड़े से tricky होते हैं बनाने में, उसके बाद फिर जो PDF and everything वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। Okay, over to you, Dakshita. Okay. Okay. Hi guys. Again, I think a lot of you might have been at my sessions, and some of you might be new today. So we'll go very slowly for this session. Our focus for today's session is the macaron shells. Okay. We learn to make the macaron shells. The focus is not the filling. The focus is nothing else apart from the shells. ठीक है, पूरा का पूरा फोकस हमारा आज का सिर्फ शेल्स पर है। फिलिंग बहुत टाइप्स की होती है, ब्रीफ में हम उसे डिस्कस कर लेते हैं, बट पूरा 1 घंटा हमको कैसे बनाना है वो शेल, वो इम्पोर्टेंट है हमारा। ठीक है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स से बनता है। वी नीड ओनली 4 इंग्रेडिएंट्स फॉर दिस: aquafaba, castor sugar, अभी Saloni, can you hear my voice? I can hear you and it is clear, Dakshita. Okay, so we need only 4 ingredients: aquafaba, castor sugar, icing sugar, and almond flour. Almond flour. None of the 4 ingredients is replaceable. None of the 4 ingredients is replaceable. None of the 4 ingredients can be left out. None of the 4 ingredients, you can go ahead and add something else. Nothing can be done. The 5th ingredient is cream of tartar. If you can get it, well and good. If you cannot get it, just leave it. Okay. And the color which you will be using. So I'll be using a pink color, sorry, blue color, turquoise color. So any color which you want to use. ओके, सो आज जो हम अपना मैक्रोन्स बनाएंगे, मैक्रोन्स में हम लोग बेसिकली सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट्स यूज करने वाले हैं, एंड ये जो 4 इंग्रेडिएंट्स होंगे वो बिल्कुल भी रिप्लेसेबल नहीं है। आप इनको किसी भी चीज से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। ओके, अगर आप किसी से भी रिप्लेस करेंगे तो वो खराब हो जाएगा। ओके, सो हमारे 4 इंग्रेडिएंट्स में आता है एक आमंड फ्लावर, एक होता है एक्वाफाबा, एक होता है what was it, castor sugar and icing sugar। ये 4 चीजें हैं जो हम यूज करेंगे। उसके बाद फिर आप इसमें ऐड कर सकते हैं जेल कलर्स। कलर्स मतलब आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, ना चाहें तो नहीं ऐड कर सकते हैं, वो बिल्कुल आपके ऊपर है। ओके, उसके बाद इसमें एक और चीज ऐड होती है क्रीम ऑफ टाटा। जो क्रीम ऑफ टाटा होती है वो आप रिप्लेस कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो यूज करिए, चाहे तो ना यूज करिए, बट जो स्टार्टिंग के 4 इंग्रेडिएंट्स है वो यूज करना कंपलसरी है। Perfect. Yes, guys, I know you have a lot of questions. For the first time, I have come with an entire notes for myself to deal with you. Okay, so please hold on. Please keep your questions at rest. A lot of your questions will be dealt with. Please पहले सुन लो, ठीक है? Saloni has been a host for a lot of my sessions. A lot of you have been at my previous sessions. You know I don't come with a list of notes. Today I am here because this has a lot to be dealt with. Please keep your questions, Abhi. Hold on for some time, okay? Perfect. Let's start with the recipe first. And I will be teaching a lot through the recipe once our macarons are at rest and once they're baking. One thing you need to keep in mind is your
Macarons will only be baked in an OTG or oven. ठीक है? I will only be teaching in an OTG or oven, nothing else. जो हमारी आज की रेसिपी है उसके लिए आपके पास एक ओटीजी या फिर अवन होना कंपलसरी है। अगर आप ओटीजी या अवन के अलावा आप किसी में बेक करना चाहते हैं तो उसमें जो मैक्रोन्स हैं वो नहीं बनते हैं। आपके मैक्रोन सिर्फ और सिर्फ ओटीजी या फिर अवन में बनते हैं। ओके Okay. Two very important things. Four very important vessels or machines which you will be using is whisk, spatula, weighing scale for measuring. Please do not measure in cups. You'll never be able to make macarons if you're measuring in cups. A weighing scale is very essential. And the fourth thing is an oven thermometer. You need this. Okay. Macarons are very delicate to temperature, and this is required. If you don't have this, there's a rare chance you'll be able to perfect your macarons. So these four things are very important once you're going to make a macaron. Okay? Because you are baking at home, and our home ovens or home OTGs do not have adequate temperature settings. This oven thermometer will help you in long run. ओके सो आज जो हम अभी हम लोगों ने इंग्रेडिएंट्स देखा। इंग्रेडिएंट्स मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ। द इंग्रेडिएंट्स आर फर्स्ट आलमंड फ्लावर, सेकंड इज एक्वाफाबा, थर्ड इज कैस्टर शुगर, फोर्थ इज आइसिंग शुगर। ये चार आपके इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम लोग यूज करने वाले हैं अपने मैक्रोन्स बनाने के लिए। जो भी यूटेंसिल्स हैं उसमें लगेगा आपको एक स्पैचुला, एक मिक्सिंग हैंड मिक्सर और आपको इलेक्ट्रिक मिक्सर और आपको लगेगा ओटीजी ऑफ कोर्स और एक थर्मोमीटर और वेइंग स्केल। वेइंग स्केल और थर्मोमीटर होना कंपलसरी है। अगर आप उसको कप्स में मेजर करेंगे तो ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि आपका जो मेजरमेंट है वो गलत हो जाएगा। एंड अगर आपका मेजरमेंट मैक्रोन्स में थोड़ा सा भी गलत होता है तो आपके मैक्रोन्स ना बनके वो बिल्कुल एकदम पापड़ जैसे हो जाएंगे। इसीलिए प्लीज हैव अ वेइंग स्केल। वेइंग स्केल पे आप इजीली अच्छे से मेजर कर सकते हैं। एंड थर्मोमीटर इसलिए चाहिए हमें ताकि हम एक एक्यूरेट टेम्परेचर पे उसको बेक कर सकें। बिकॉज अगर टेम्परेचर में थोड़ा सा भी फेरबदल होता है तो फिर आपकी जो पूरी की पूरी मैक्रोन्स हैं वो खराब हो जाते हैं। दक्षता, इज माय वॉइस क्लियर? Yeah, your voice is clear. Okay. ठीक है? Okay. So I have reduced aquafaba here. What do I mean by reduced aquafaba is? Okay, what do I mean by aquafaba pehle to? I think a lot of you might not be knowing what aquafaba is. Aquafaba, guys, is chickpea water. जो छोले बनते हैं ना घर में, उसका पानी होता है aquafaba. ठीक है? So you need aquafaba. There'll be two brands which I personally use the most. One is American Garden. Other is D से कुछ तो नाम है. I'll tell the brand, guys. ठीक है? So these two brands, or yes, you can make your aquafaba at home. We will not be discussing the recipe right here. You can follow me Instagram page. You'll find the recipe there. If we get on to making aquafaba and almond flour right now, we won't be able to make macaron session. Okay, it's a lengthy process. The process of making aquafaba at home is 16 hours long. Okay, so we cannot discuss it over class right now. Okay, so I have reduced aquafaba. Now, what is reduced aquafaba? If you are taking aquafaba from can or a tin, if that tin has around 140 grams of aquafaba, you boil that aquafaba over flame and reduce it to 70 grams. Okay. Post that, you measure out the aquafaba you need. तो अगर आपके टिन से 140 ग्राम्स aquafaba आपको मिला, आप उसे मेजर करोगे, सपोज 140 ग्राम्स aquafaba निकला, आप 140 ग्राम्स को गैस पे रख के बॉईल करना शुरू करोगे हल्की फ्लेम पर, और जब वो 70 ग्राम्स तक पहुंच जाएगा
तब आप उसे यूज कर सकते हो। 70 ग्राम्स को आप स्टोर कर लो, उसमें से अभी सपोज आपको 19 ग्राम्स चाहिए है या जितना भी पीडीएफ में मेंशन है उतना चाहिए है, आप उतना निकालो, बाकी को आप स्टोर कर लो। ओके, सो यू रिड्यूस योर aquafaba to half. Then you take your electric whisk and start whipping it up. छोले के साथ नहीं बॉईल करना, छोला आप अलग यूज कर लो, सिर्फ छोले का पानी यूज करना. You don't use the chickpeas which come with it. You can use it separately, I mean, but not inside. You don't need to boil your water with chickpeas. ओके, तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे लिया हुआ है एक्वाफाबा. एक्वाफाबा का मतलब होता है कि जो आपके छोले होते हैं ना, जब आप छोले को भिगाते हो तो उसके बाद जो उसका पानी होता है उसे कहते हैं एक्वाफाबा. तो आप एक्वाफाबा जो मार्केट में मिलता है आप वो यूज कर सकते हैं, एंड अगर आप चाहें तो एक्वाफाबा घर पे भी बना सकते हैं. एंड अगर आप ये चाहते हैं आप देखना कि एक्वाफाबा बेसिकली कैसे बनता है, तो आप वो चीज देख सकते हैं दक्षता के इंस्टाग्राम आईडी पे, वो वहां पे है. एंड अगर आपको इंस्टाग्राम आईडी नहीं पता है, डोंट वरी, मैं आपको सेशन के एंड में बताऊंगी कि आपको इंस्टाग्राम आईडी उनकी कहाँ पे मिल जाएगी. ओके, बट अगर आप चाहें तो एक्वाफाबा ऑलरेडी मेंशन्ड है हमारे ऐप पे, आप वहां से बाय भी कर सकते हैं. सो अब यहाँ पे जो हम लोग ने एक्वाफाबा लिया है वो रिड्यूस्ड एक्वाफाबा है. रिड्यूस्ड एक्वाफाबा का मतलब है कि मान लीजिए कि आपने अपना एक्वाफाबा लिया, यानी कि छोले का पानी लिया, और आपने देखा कि वो 140 ग्राम्स है, 140 ग्राम है. तो आप उसको तब तक उबालेंगे जब तक वो आधा ना हो जाए, यानी कि जब तक वो 70 ग्राम ना बचे, तब तक आपको उसको उबालना है. जब वो आधा हो जाएगा तब आप उसको यूज कर सकते हैं. ओके, एंड अभी आप देख सकते हैं हम लोग मशीन विस्कर से इसको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं. So once you boil your aquafaba and reduce your aquafaba, you have to cool your aquafaba and then only use it. Do not use a warm aquafaba. Okay, so once you have reduced it, let it sit in the fridge for 24 hours. After 24 hours, remove it from the fridge, let it cool down, come down to room temperature, and then use it. Okay? Guys, macaron making is a tiring process. It is a long process. You'll have to give it time. There's no way to speed up the process. Okay? We will beat it for I'll beat it for 6-7 minutes without sugar, and then I'll have to beat it with sugar. You have to reduce the store-bought aquafaba. Yes, घर पे जो aquafaba बनाओगे वो already reduced होगा. ओके, सो यस, जो आपका एक्वाफाबा होगा वो आपको ठंडा लेना है, गरम नहीं लेना है. जब आप एक बार उसको गरम कर लेंगे उसके बाद उसको ठंडा करिए एंड देन उसको यूज करिए. एंड गाइस, गिव मी 1 minute. If you try to listen what is going on here, Dakshita has been explaining everything in English and I'm translating everything in Hindi. So whenever Dakshita is speaking, she is speaking in English, and when I'm speaking in Hindi. So please try to understand, please try to pay little more attention, because there are a lot of people here, there are coming lot of queries here. So we need to take little bit time, and please try to understand here. Okay, so Dakshita जो भी बता रही हैं वो इंग्लिश में बता रही हैं, मैं वो सेम चीज को हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ. तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्योंकि हर चीज बताई जा रही है यहाँ पे, एंड आई कैन सी मैक्सिमम क्वेश्चंस आंसर भी हो रहे हैं क्योंकि टीम भी आंसर कर रही है, प्लस जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो दक्षता बता रही है थोड़ा थोड़ा करके. सो प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखिए. यस दक्षता. Okay, abhi isme we'll be adding cream of tartar. Why are we using cream of tartar? Because cream of tartar helps in stabilizing your aquafaba. Okay, so not a lot of it, just 1/8 teaspoon, which is 2 pinches. So I whipped up my aquafaba for 3 minutes. Post 3 minutes, I've added 1/8 teaspoon of cream of tartar. Cream of tartar helps in stabilizing your macarons or help in stabilizing your egg whites or aquafaba, whatever you're using. The quantity of aquafaba I have taken right now is 19 grams because I have the recipe which I am making. Okay? If you're using the full recipe, it's gonna be 37 grams. Again, we'll whisk it for next 4 minutes.
While the time I'm whisking it, I'm gonna be on mute. You have to whisk it at the highest speed possible. For me, it's 7. If it's 6 for you, use 6. If it's 7, use 7. This is a Nova beater and its watt is 220 watts. Dakshita, can you please repeat the name of the product that we just added? It is called as Cream of tartar. cream of tartar. Yeah, This is it's from perfect. Then Urban Platter. okay. ओके सो अभी यहाँ पे क्या हुआ कि दक्षता ने अपना जो एक्वा फाबा है उसको अच्छे से विप कर लिया. हम लोगों ने यहाँ पे जो दक्षता यूज करी है वो नोवा का आपका हैंड बीटर है एंड वो 220 वॉट्स का है. अगर आप अपने लिए खरीदना चाहते हैं तो आप नोवा का खरीद सकते हैं, आप फिलिप्स का खरीद सकते हैं, आप खरीद सकते हैं मॉर्फी रिचर्ड्स का. एंड ट्राई करिएगा कि 220 से 300 वॉट्स का आपका जो बीटर है वो रहे. एंड जब हम लोगों ने अपना एक्वाफाबा को अच्छे से विप कर लिया उसके बाद हम लोगों ने इसमें ऐड किया है क्रीम ऑफ टाटा. जो क्रीम ऑफ टाटा हम लोगों ने ऐड किया है वो हम लोगों ने ऐड किया है 1/8 टीस्पून. 1/8 टीस्पून का मतलब होता है कि ऐसे 2 चुटकी अगर आप लेकर के डाल दे रहे हो तो वो हो जाएगा आपको 1/8 टीस्पून. ओके. एक्वाफाबा की क्वांटिटी है 19 ग्राम्स. यहाँ पे जो दक्षता बना रही है, दक्षता ने जो रेसिपी दी है पीडीएफ में उसकी हाफ रेसिपी वो बना रही है. Dakshita is making half recipe that is given in the PDF and hence she has taken 19 grams of aquafaba here. Perfect. Now I have caster sugar. Don't add your caster sugar all together. Add it in batches. So I'll add it in batch of 2. If you're making a full recipe, add it in batch of 3. So once my aquafaba turns frothy, can you see this froth, guys? Froth दिख रहा है सबको? उसके बाद आप अपना caster sugar डालो. I'll just turn on mute so you can talk. Okay. So अभी हम लोगों ने अपना aquafaba ऐड किया, cream of tart ऐड किया and then हम उसमें ऐड कर रहे हैं caster sugar. Caster sugar जो हम ऐड कर रहे हैं एक साथ नहीं ऐड करेंगे, उसको हम लोग बैचेस में ऐड करेंगे. हम लोग उसको 2 बैचेस में ऐड करने वाले हैं. ओके. पहले आप थोड़ा सा ऐड करोगे, विप करोगे, फिर आप जब वो हो जाएगा तो उसके बाद वापस से आप ऐड करोगे. कैस्टर शुगर और आइसिंग शुगर में डिफरेंस ये होता है कि कैस्टर शुगर जो होती है वो हल्की सी ग्रैन्युलेटेड होती है, मतलब कि जो आपकी नॉर्मल शुगर होती है उससे बहुत कम, मतलब कि एकदम एकदम पाउडर जैसी नहीं होती है, हल्की सी दरदरी सी होती है. एंड जो आइसिंग शुगर होती है वो ऑफ कोर्स बिल्कुल फाइन पाउडर की तरह होती है. The major difference between your caster sugar and icing sugar is that your icing sugar is like a fine powder. When it comes to caster sugar is not that fine. It is just, it's just a little rough, like just a very little rough. Okay, did I miss on some question or something? Yeah. So there are a few questions. So the very first question is that for how much time do we have to beat it? There is no timeline, guys. Some people may have to whisk it for 15 minutes. Some may have to whisk it for 10 minutes. Minimum is 8 minutes. I don't think anybody would be able to do it in less than 8 minutes. Okay. Caster sugar ka quantity is 33 grams. I've added in batches of 3 or 4. Thoda thoda karke. Abhi this mixture is frothy. Okay. Now we need to make it to a stiff peak stage. A stiff peak stage in macarons is known as meringue. So we have to form a stiff meringue for the caster sugar and aquafaba which we added. For that we'll again have to beat it for another 5-6 minutes. If you don't have cream of tartar, just skip it. Don't add anything. You can't use any other sugar instead of caster sugar. You cannot add any other sugar instead of powdered sugar. Guys, this was something which I told in the starting of the session. There's nothing which is replaceable out here. But instead of aquafaba, you can use egg whites, but your egg whites should be aged for minimum 2 days. Okay. सो अभी हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने अपनी कैस्टर शुगर अच्छे से मिक्स कर दी. कैस्टर शुगर जो हम लोगों ने ली थी वो थी 33 ग्राम्स
एंड हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके उसको ऐड किया था। उसके बाद अब आप देख रहे हैं ये हमारा ऐसा व्हाइट कलर का एक वो बन गया है। अब हम इसे तब तक विप करेंगे जब तक हमें प्रॉपरली इसमें स्टिफ पीक्स ना मिल जाए। ओके, वी आर गोइंग टू विप इट until we get the stiff peaks of it, and the stiff peaks are called as meringue. जो stiff peaks होती है उनको हम लोग कहते हैं meringues. Okay, now till Dakshita is whipping it, I will quickly repeat everything that we have done till now. अभी तक हम लोगों ने जो भी चीजें की हैं मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, उससे मुझे पता है आधे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, because I can see a lot of questions related to that. Meringues is the stiff peaks that are formed after you whip your this whole batter that we have just created. These are called as meringues. Okay. And yes, the PDF has already been uploaded on the app with the measurements given in it. सारी की सारी जो measurements हैं वो दी हुई हैं PDF में, and मैं आपको last में दिखा दूंगी कि आपको PDF कहाँ मिल जाएगा. I will show you in the end that where you will find the PDF. Alright, okay. So now there are 4 compulsory ingredients that you have to take. The 4 compulsory ingredients are the almond flour, the castor sugar, the icing sugar, and the aquafaba. These are the 4 ingredients that you cannot replace at any cost. After that, there are 2 more ingredients. One is called as the cream of tart, and and the colors. So these are the 2 ingredients that if you want to add, you can, and if you do not want to add, that is absolutely fine. Okay. So हम लोगों ने अभी यहाँ पे 4 कंपल्सरी इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको लेना है, एंड आप उन 4 इंग्रेडिएंट्स को बिल्कुल भी रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, उनकी जगह पे आप और कुछ भी यूज नहीं कर सकते हैं। तो वो 4 इंग्रेडिएंट्स हैं आपका, एक कैस्टर शुगर, आइसिंग शुगर, एक्वाफाबा और आपका आमंड फ्लावर। आमंड फ्लावर का मतलब होता है कि जो आपका बादाम वाला आटा होता है वो। ओके, सो ये 4 चीजें तो आप बिल्कुल रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा 2 और इंग्रेडिएंट्स हैं जिसे कहते हैं क्रीम ऑफ टार्ट और कलर्स। ये 2 ऐसी चीजें हैं जो आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, चाहें तो आप नहीं ऐड करिए, ये बिल्कुल आपके ऊपर है। ओके, और जो भी चीजें ऐड होंगी सारी की सारी रूम टेम्परेचर पे है। एवरीथिंग दैट इज बीइंग एडेड हियर इज एट रूम टेम्परेचर। ओके, we are not going to cover that how you are supposed to make the almond flour or how you're supposed to make the aquafaba. If you want to see that, you can check Dakshita's Instagram ID. You will find it there. दक्षिता की जो इंस्टाग्राम आईडी है वहां पे आपको एक्वाफाबा और आपको आमंड फ्लावर की रेसिपी मिल जाएगी, आप वहां पे देख सकते हैं। ओके, सो व्हाट वी हैव डन इज we took aquafaba, we added cream of tartnut, and we have added castor sugar, and now we are whipping it to a point that we get stiff peaks. Okay, हम लोगों ने अभी इसमें एक्वाफाबा, उसके बाद हम लोगों ने इसमें ऐड किया है क्रीम ऑफ टार्ट, एंड देन हम इसमें ऐड किया है कैस्टर शुगर, और हम इसको तब तक whip करेंगे जब तक हमें stiff peaks ना मिल जाए। And don't worry guys, we will be showing you that what stiff peaks are. हम आपको दिखाएंगे कि stiff peaks क्या होती हैं। Okay? Okay. Now, for the aquafaba, yes, we have used the reduced aquafaba. By what is reduced aquafaba? That let's suppose that you are using the aquafaba from the tin. Okay. Then let's suppose whatever amount of aquafaba you have in your tin, you are going to heat it to a point that it gets reduced to its half. And then you're going to use your aquafaba. If you're using the aquafaba that is made at home, it is already in its reduced form, and hence you do not need to reduce it. Okay, जो घर पे aquafaba बनता है वो ऑलरेडी रिड्यूस्ड फॉर्म में होता है, इसलिए आपको उसको रिड्यूस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट अगर आप जो मार्केट से आप aquafaba लेते हो, अगर आप वो यूज कर रहे हैं तो आपको क्या करना है कि उसमें जितना भी aquafaba आपको मिलेगा आप उसको तब तक हीट अप करेंगे जब तक वो आधा ना हो जाए। ओके, एंड ऑल्सो गाइज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज
an eggless recipe. Why do you want to use egg here? When we will try to come up with a recipe where we'll be teaching the same thing with the eggs too. But for today, the recipe is eggless. Please do not ask us about the eggs. जो रेसिपी हम आज सिखा रहे हैं वो एगलेस है, तो प्लीज लेट्स हम लोग एगलेस पे ही फोकस करेंगे. ओके, यस दक्षता. ठीक है, मैं एक बार बस क्विकली आपको विस्क करके दिखा देती हूँ. हाउ डू यू नीड टू विस्क इट, एंड वी हैव रीच्ड ऑलमोस्ट अ स्टिफ पीक स्टेज. नाउ once you reach or almost reach a stiff peak stage or are about to reach a stiff peak stage, add the color which you want to. Please only add gel color, no liquid color, no powdered colors. Okay, add your color and give it a final mix. तो अब आप नेक्स्ट देख सकते हैं कि हमारा जो एक्वाफैबा है वो ऑलमोस्ट स्टिफ पीक्स पे आ चुका है. तो जो स्टिफ पीक्स होंगी जब आप वहां तक पहुंचने वाले होंगे तो आप उसमें कलर ऐड कर सकते हैं अगर आप ऐड करना चाहें तो. Okay, this is a stiff peak stage, guys. Can you see the aquafaba की points standing up? Can you see these points जो खड़े हो रहे हैं aquafaba के? Guys, visible है, whisk पे दिख रहे हैं ये peaks. यस दक्षता, आई कैन क्लियरली सी. आई थिंक सबको दिख रहा होगा कि ये जो पीक्स हैं वो आपको एकदम ऐसे खड़े खड़े दिख रहे हैं. इसे कहते हैं स्टिफ पीक्स. Right, and this is the stage you need to reach for making macarons. उसके बाद scrape down everything bowl में. This is gonna take time, ठीक है? So for me also, I think Saloni was talking for the last 4 minutes, right? So this is gonna take time. Next, we'll keep a sieve on top. Please sieve your almond flour and your sugar, icing sugar, before you add it. Do not add all together, add in batches of 2. So, अभी आप देख सकते हैं हम इसमें ऐड कर रहे हैं अपना आइसिंग शुगर और अपना आमंड फ्लावर. आमंड फ्लावर का मतलब होता है बादाम वाला आटा. ठीक, तो हम लोगों ने अपना यहाँ पे आइसिंग शुगर और बादाम वाला आटा लिया है. दोनों को हम लोग साथ में छान रहे हैं. ठीक, एंड आपको इसको अच्छे से छानना है क्योंकि हम नहीं चाहते कि इसमें किसी भी तरीके के लम्स पड़े या कोई भी प्रॉब्लम हो. ओके, And आप इसे, so now you'll start mixing the half quantity with the macaronage which you made, the mixing process, sorry, the meringue which you made, and this mixing is called as macaronage. okay. Dakshita, how much quantity of caster sugar and almond flour you have taken? In PDF, it is 55 grams of each. It's an equal quantity, 55, 55. Currently, we've taken 27 of each. Okay. So the almond flour is 55 grams. Icing sugar also 55 grams. Abhi currently they both are 27 grams. Okay. So since Dakshita is making half of the recipe, so she has used 27 grams of almond flour and 27 grams of icing sugar. क्योंकि दक्षिता आधी बना रही है अपनी रेसिपी को, तो वो यूज कर रहे हैं यहाँ पर 27 ग्राम्स अपना आइसिंग शुगर और 27 ग्राम्स ही वो यूज कर रही हैं अपना आलमंड फ्लावर. Okay. Abhi we'll fold these wet ingredients with the dry ingredients. So you go around in circle and cut it in center. So you cut, fold and cut, fold and cut. This is how you make a macaronage or a rape. So RAPPE, ठीक है? दोनों ही नाम है. We oftenly called it macaronage. So that is how you form a macaronage. This 2 steps are the most important steps of making a macaron.
making the perfect meringue and then perfect macarons. ओके सो नेक्स्ट हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने अपने दोनों आमंड फ्लावर और आइसिंग शुगर को अच्छे से छान लिया। छानने के बाद हम उसको अपना जो हम लोगों ने पहले अभी वो बैटर बनाया था ना स्टिफ पीक्स वाला, उसमें हम लोग उसको मिक्स करेंगे। जब आप मिक्स करोगे तो आपको कट एंड फोल्ड मेथड यूज करना है। कट एंड फोल्ड मेथड का मतलब है कि आप देख सकते हैं दक्षता ऐसे पहले फुल सर्कल बना रही है, सर्कल बनाने के बाद बीच से उसको कट कर दे रही है, इसे कहते हैं कट एंड फोल्ड मेथड। आप पूरा सर्कल बनाइए, बीच से कट कर दीजिए। ये प्रोसेस है आपको करने का, एंड इसी प्रोसेस से आपको उसको फोल्ड करना है। अगर आप किसी और प्रोसेस से करेंगे तो आपका वो खराब होने के बिल्कुल चांसेस है। ओके, एंड आपको तब तक मिक्स करना है जब तक वो अच्छे से मिक्स हो ना जाए, कोई टाइमिंग नहीं है। आपको जब तक मिक्स करना है जब तक आपको 8 नंबर बनाने का बैटर ना मिल जाए. So you'll form an 8 using this batter. Okay, I'll try to show it. I am not sure if you guys can perfectly see it, but abhi ek second. When you are able to form a perfect number 8 using this batter, you know that your batter is ready to be piped. Can you see? I was moving my spatula in number 8. बहुत बड़ा सा नहीं बनाना है, ऐसे नहीं कि पूरे बैटर का नंबर 8 बना लिया हमने, बट ट्राई करना है कि बन जाएगी. कैन यू सी दिस नंबर 8 यहाँ पे, सॉरी नंबर 8 टाइप ऑफ समथिंग यहाँ पे. दिस इज हाउ you know that you have the perfect macaroons. ओके तो अभी आपको कैसे पता चलेगा कि आपने जो अपना बैटर बनाया है वो बिल्कुल परफेक्ट बना है? उसको चेक करने का तरीका ये है कि आप अपने बैटर से अगर एक 8 बना पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका बैटर बिल्कुल सही बना है। आपको ये नहीं करना कि आप पूरा बैटर ले रहे हैं देन उससे 8 बना रहे हैं, नहीं। थोड़ा सा लीजिए एंड देन उसी से ऐसे 8 बना के देखिए, अगर प्रॉपरली 8 बन जा रहा है तो मतलब कि आपका बैटर बिल्कुल सही से बन गया है। ओके, नहीं बन रहा है तो थोड़ी देर और कर लीजिए उसको मिक्स। Towards end, if the 8 is breaking, that is fine, but at least you should be able to free flow it. Okay, and this is the nozzle which we'll be using for piping our macarons. Okay, so I have a glass. I'll put this on top. Open. Transfer my. So right now you can see we are just transferring our batter in the piping bag. अभी हम अपने बैटर को पाइपिंग बैग में ट्रांसफर कर रहे हैं। Okay. These many steps are common for all of you living across India. The next steps are something which may vary for depending upon the area you stay. मतलब step same रहेगा, but time कितना लगेगा वो आप जहाँ रहते हैं वो इस पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है वो मैं अभी बताऊँ। Guys, please very carefully look at how we'll be piping it. Push your batter down. Okay. It's a round nozzle. It's a plain round है. ठीक है. आपको पाइप करते हुए ऐसे नहीं रखना है, ऐसे नहीं रखना है, ऐसे नहीं रखना है. Exact 90 degree रखना है. If you do not keep it at 90 degree, you are gonna end up with shifted feet. So this is my tray which I'm baking in. You can use double parchment paper or a silicone mat. Keep it at 90. Pipe. And gently swirl, pick it up. Okay. Again. Pipe. Gently swirl, pick it up.
थोड़ा सा प्रेशर एक्सर्ट करना है, करते रहो, उठाना नहीं है बीच में गाइस, एंड स्वर्ल करना है थोड़ा सा, और बहुत ही आराम से इनको उठाना है। इफ यू डोंट स्वर्ल इट, पता है क्या होगा, यू विल एंड अप विद अ शिफ्टेड फीट अगेन। आई मेक वन wherein I don't swirl and you see what happens. So कर दिया, बिना swirl करे सीधा उठा दिया। अभी ये वाला आप लोग देखना कैसा बने। The next step is tapping of your trays. So I have a silicon mat. Why I'm not making on a silicon mat is because most of you won't have it. Okay, that's the reason I'm using a double parchment paper. Please ensure you use 2 parchment papers. Okay. Tap this tray hard on your working counter. जितना तेजी से कर सकते हो 3-4 बार मारो इस tray को। ओके सो अभी हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने अपना जो बैटर था उसको पाइपिंग बैग में डाला। पाइपिंग बैग में जो हम लोगों ने नोजल यूज किया था वो नॉर्मल राउंड नोजल यूज किया था हम लोगों ने। ओके फिर हम लोगों ने क्या किया कि आपको आपका जो नोजल होगा ना, मतलब जो आपका पाइपिंग बैग होगा उसको बिल्कुल स्ट्रेट 90 डिग्रीज पे रखना है। आप उसको ऐसे, जैसे जब आप नॉर्मल केक पे आइसिंग करते हो तो आप क्या करते हो कि उसको ऐसे थोड़ा सा साइड में अपना पाइपिंग बैग कर लेते हो ना, ऐसे टिल्ट कर लेते हो। तो आपको वैसे साइड में नहीं करना है, आपको बिल्कुल सीधा ऐसे सीधा रखना है। ओके एंड सीधा रख के आपको एकदम प्रेस करते रहना है। जितना बड़ा आपको साइज चाहिए आप उतना प्रेस करिए उसको। एंड जब आप उसको प्रेस करोगे उसके बाद जब आप लास्ट में पहुंच जाओगे एकदम, तो हल्का सा अपना पाइपिंग बैग को स्वर्ल कर लेना। स्वर्ल करने का मतलब है हल्का सा बस आप उसको ऐसे घुमा दोगे ताकि आपको बिल्कुल ऐसे खड़ी खड़ी पीक्स ना मिले। क्योंकि आपने अभी देखा हम लोगों ने एकदम स्टिफ पीक्स बनाया था। तो स्टिफ पीक्स आपको नहीं चाहिए, मतलब ऐसे नहीं चाहते कि ऊपर से ऐसे खड़ा रहे। इसके लिए आपको जब एंड करोगे तो ऐसे घुमा दीजिएगा। ओके एंड हम लोगों ने इसको यूज किया है, यहाँ पे नीचे जो आप पेपर देख रहे हो उसको कहते हैं पैचमेंट पेपर। हम लोगों ने पैचमेंट पेपर के ऊपर बनाया है। अगर आपके पास सिलिकॉन मैट है तो आप उसके ऊपर भी बना सकते हैं, वो तो बेस्ट होता है। बट सिंस सिलिकॉन मैट सबके पास नहीं होता है इसलिए हम लोग आपको पैचमेंट पेपर पे दिखा रहे हैं। सो पैचमेंट पेपर पे आप बनाएंगे एंड देन जब आप अपना मैक्रोन्स का ऐसे बना लेंगे उसके बाद जैसे आप केक के लिए आप अपना टिन को लेके ऐसे हल्का सा वो करते थे ना, करते थे, वैसे ही बिल्कुल आपको यहाँ पे भी आपको अपने टिन को हल्का सा टैप करना है ताकि कोई भी एयर बबल्स उसमें ना रहे। परफेक्ट। तो आपका एयर बबल्स सारे ऊपर आ जाए और उसके बाद एयर बबल्स को आप पॉप करोगे किसी टूथपिक को लेकर। ठीक है, सो वेयर एवर यू सी एयर बबल्स, टेक अ टूथपिक एंड जस्ट पॉप दोस एयर बबल्स। Okay, Dakshita, a lot of people have this question that can they use butter paper also instead of parchment हाँ paper? हाँ। Okay. तो अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप पैचमेंट पेपर भी, अरे सॉरी, अगर आपके पास पैचमेंट पेपर नहीं है तो आप बटर पेपर भी यूज कर सकते हैं। If in case you do not have parchment paper, you can always use the butter paper. Okay. Now And also, yes, Dakshita. we'll keep this aside. मेरे यहाँ पे I have a sun out. I do not have that much of humidity. It's not raining. My sheets will be formed within the next 15 minutes. Okay, if you stay in a humid place, if you stay where it's raining, if it's cold, this time will increase to 30 minutes, can also take up to 45 minutes. Okay, so for me this is gonna take next 15 minutes. Okay, makes sense guys? Depending upon your outside environmental conditions, the sheet formation will vary. What is the sheet formation? Your top starts solidifying and it does not stick. ठीक है, but I keep it below a fan so that this process और जल्दी हो जाए, मतलब this timeline also reduces to like 7-8 minutes. Okay, and also for all the questions they were asking that what was she doing with the toothpick there, she was just trying to pop all the air bubbles that were there, which did not which were not bursted even after tapping it. So we were just
bursting them with the help of a toothpick. Toothpick से दक्षता से वो जो एयर बबल्स थे उनको हटा रही थी. ओके ओके. सो एक और चीज, जब आप अपना मैक्रोन को आप अपना रखोगे उसके अंदर बेक होने के लिए, तो आपकी जो टाइमिंग्स हैं जनरली डिपेंड इस पे करते हैं कि आपके अराउंड एनवायरमेंट. बेक नहीं कर रहे हैं अभी. ओह आई एम सॉरी, आई मीन बाहर रखते हो. सिर्फ बाहर रूम टेम्परेचर पे रख रहे हैं. बाहर ही रख रहे हैं रूम टेम्परेचर, कहीं पर वो नहीं रखना है, मतलब फ्रिज में नहीं रखना है, फ्रीजर में नहीं रखना है, गर्म जगह नहीं रखना है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रखना है आपको. और वो ऊपर से शीट बना लेगा. शीट का मतलब होता है कि वो जब आप उसका ऊपर टच करो तो वो चिपके ना हाथ ऐसे. ठीक है. ओके क्लियर. अभी तक सबको सब क्लियर है ना गाइस? रेसिपी नहीं है और रेसिपी आ जाएगा. ठीक है, अभी अपकमिंग पोस्ट है इंस्टाग्राम पे, आ जाएगी रेसिपी, इस हफ्ते में आ जाएगी. अभी जो सीख रहे हो पहले उतना तो सीख लो प्लीज. ओके वी आर क्लियर विद मिरान, वी आर क्लियर विद मैक्रोनेज, ग्रेन स्केल सीड, शुगर, पाइपिंग, स्टोरिंग नहीं हुआ, कलर्स. ठीक है, इतना क्लियर हो गया. बेकिंग 5 मिनट में डील करते हैं. उससे पहले दो और चीजें मुझे आपको बतानी है. गाइस वन इज मैक्रोन, अदर इज मैक्रून. ठीक है, these two things are different. Okay, macaron is not equal to macaroon. Macaroon is made of coconut. It's a coconut cookie. Macaron is what you're learning right now. Okay guys, clear? macaroon अलग होता है, वो कोकोनट कुकी है. macaron आप अभी सीख रहे हो. ठीक है, दोनों को कंफ्यूज मत कर देना प्लीज. macaron बनाने के 3 तरीके होते हैं. there are 3 ways to make macarons. One is Italian, Swiss and French. What you've learned today is the French way, which has nothing to do with gas. Just mix everything and make it. Your Italian macarons or जो Italian meringue होता है, that is more stable. But what you need is a gas. You need sugar and you need water. Keep on whisking it. Then you add it to the eggs. Again, keep on whisking it. You need a gas thermometer along with an oven thermometer in it. You bring the sugar to 245 degree Fahrenheit and then use it. Okay? It's a longer process. Again, Italian meringues also need a gas thermometer, and that is made at 120 over gas and then in OTG. Okay? Those are lengthy processes. Mostly your bakery, mostly home bakers use the French meringue only. Okay? And you have learned today the French meringue cake. Perfect. Clear guys? Otherwise there are 2 more ways, which is the Swiss and Italian. Okay. Cool. Let's also side by side deal with your brands. तो आपको दे रखे हैं इन लोगों पंखुड़ी वालों ने, और इन लोगों ने सारे ब्रांड्स दे रखे हैं. प्लीज आप चेक कर लो एक बार वो. ठीक है, जेल कलर ही यूज करना है, नो लिक्विड कलर, नो पाउडर्ड कलर, नथिंग. ओके. Are we left with something, Saloni, for the batter part of No, the shells? No, I think we aren't left with anything for the batter part because हम लोगों ने पूरा batter बना लिया है. Perfect. Can you replace anything? Please, no replacement. The color which we have used today is turquoise blue from Magic. You can use Wilton. You can also use Chef Master. Okay. Okay. There are few questions actually. You'll have to wait क्योंकि we won't be able to deal with baking and the filling. बहुत lengthy है guys. आप please रुक जाओ. एक तो इतने questions आ रहे हैं, मेरे को लग रहा है उनको देख देख के I am getting tense. Please hold on guys. Please hold on. Okay. How do you bake them? 5 minutes रुक जाओ. We'll wait. Please wait for 5 minutes and I'll deal with how to bake them. Let's first quickly come to the fillings. Okay. For your fillings, guys, you can use buttercream, you can use ganache, you can use buttercream, ganache, you can use Nutella, you can use jams, you can use compotes, you can use lemon curd, anything and everything you like, you can use it. Do not use whipping cream. Okay? You cannot use whipping cream or else your macarons will turn soggy. Okay?
As a sample, I think in the PDF you will have 2 to 3 sample recipes of buttercream and ganache and all. You can use those, or you can just go ahead and use any particular recipe you know. Lemon curd, न्यूटेला, कुछ नहीं बनाना, न्यूटेला लगा दो बीच में, ठीक है, और पीनट बटर लगा दो. You can use cream cheese fillings also. You can use competes or you can use buttercream. Any kind of buttercream goes. You cannot make any changes to the shells. Shells का recipe यही रहेगा. Please do not make any changes to the shell. You cannot add cocoa powder. You cannot add vanilla essence. You cannot add chocolate essence, coconut powder. कुछ नहीं डलेगा shells. The entire flavor for a macaron lies in the buttercream which you're adding. Shells are made without flavor. These are standard shells which you make for any flavor which you want to make. Saffron, rose, lemon curd, any 100, 150, 200 types के आप macarons बना सकते हो. Okay. Quickly, the shelf life of these macarons is 5 days. Okay. You can keep these macarons for 5 days. Post that, you can keep them only the shells, guys. Okay. And the shells you can keep in freezer for 3 months, airtight box. 5 days के लिए भी, 3 months के लिए भी, airtight box. Okay. Storing, Saloni is just gonna repeat the storing in Hindi for you all till the time I get my answers. Yeah, okay. Dakshita, can you please repeat it once because I was busy answering few of the questions. I'm so Airtight sorry. box में रखना है guys. आपने हमेशा अपना macarons को airtight box में रखना है. Store आप इन्हें 5 दिन के लिए कर सकते हो. फ्रिज में ज्यादा स्टोर करना है 3 महीने के लिए फ्रीजर में. सिर्फ शेल्स, ओके, अंदर बटर क्रीम वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ शेल्स 3 महीने के लिए फ्रीजर में एयरटाइट बॉक्स. Once you add your buttercream to your shells, you have to keep them in airtight box in fridge overnight and then they'll be good to consume. Okay. Why do you need to rest the frosting in between the macarons is for the macarons to mature. Your macarons will mature over time inside the fridge. That is the reason you take your macaron, apply your frosting, put the other macaron, keep in airtight box in fridge overnight so that your frosting and your macarons mature. If you eat it at the same time, you're gonna have crispy macarons. ठीक है. तो आप जब आपको कंज्यूम करना है, आप बटर क्रीम लगाओ या जो भी क्रीम लगा रहे हो, जो भी अंदर का फिलिंग है वो लगाओ. उसके बाद दूसरा रखो. उसके बाद आप उसे फ्रिज में रखोगे ओवरनाइट एयरटाइट बॉक्स में, सो दैट आपके मैक्रॉन्स मैच्योर हो सके और उनमें वो फ्लेवरफुल बन सके. अगर आप उसी टाइम उसे कंज्यूम कर लोगे तो वो बहुत ज्यादा क्रिस्पी रहेंगे. ठीक है. लेट मी जस्ट गेट माय मैक्रॉन. Okay. So guys, it depends on that what type of filling you're making in order to store the fillings. Because if let's suppose that if you're making the buttercream or anything like that, whatever filling if you're making the ganache, it can be stored for around like a week or maybe for 10 days or for a month. But if you're talking about like buttercream icing, it cannot be stored for such long time. So it will You don't basically add your depend on. fillings until unless you don't want to eat it. Don't add your fillings. You only store your shells. Okay, store your shells for 3 months in freezer. एक बार आपने बटर क्रीम या कोई भी अंदर डाल दिया, that is just 2 days. Okay. Okay, एक second बस. You see, once now I am touching these macarons, there is no batter sticking to my hand. This means that the sheet is formed. So अभी आपने देखा कि हम लोगों ने अपना जो मैक्रोन था उसको हम लोगों ने थोड़ी देर के लिए पंखे में रख दिया था. उसकी वजह से ऊपर की तरफ एक हल्की सी लेयर फॉर्म, मतलब जैसे वो बोलते हैं ना कि ऊपर की तरफ से थोड़ा सा सूख गया है, कि आपको वो जब आप छू रहे हो तो आपके हाथ पे कोई भी बैटर नहीं लग रहा है. तो बस हम लोगों ने वही चीज की थी. हम लोगों ने बस अपने बैटर को ऐसे सर्कल सर्कल में निकाल के ले जाके हम लोगों ने पंखे के नीचे रख दिया. एंड देन अब हम उसे बेक करेंगे. एंड जो क्रीम टार्ट होता है वो वेज होता है. ओके.
It is an eggless vegetarian recipe. Yes, Dakshita. Okay, I just changed the angle because it's too warm today. Sorry. ठीक है. Let's quickly deal with how to bake this. Again, also mentioned in the PDF, macarons can be baked from something between 140 degrees to 160 degrees. Personally, I have had macaron fails because of the temperature. In winters, they bake at 160, but in summers, it can bake at 145 also. So you will have to set your temperatures. Please do not feel disheartened if your macarons fail a first few times. A first few times, you have to adjust the temperature according to your environment. Okay, so currently I'm baking them at 145, both the rods on, fan on. And this is the only mode your macarons will bake at. Both your rods on and the fan on. ठीक है guys, आपको दोनों rods on रखना है, fan on रखना है, middle rack में रखना है, 140 से 160 डिग्री के बीच में रखना है. ठीक है? Okay. But if there is no fan, what if there is no fan? Okay, so people need to go घर में. So हाँ, अगर fan नहीं है, you can try it. Chances are that there may be a little fails, but बन जाते हैं. Temperature को आपको set करना पड़ेगा. ठीक है? So see the temperature. Try it 145 only if you don't have a fan. If you have a fan, try at 160. Monica, I don't think the water bowl method will help in this macaron thing. But try it on both the rods on and try at 145 degrees. You need to preheat, guys. This is not even a question. If you're baking, you need to preheat. Okay, a lot of questions for microwave, guys. Again, start of the session. OTG oven में ही बनाते हैं macarons. Still, if you want to give it a try, give a try in the OTG in your convection microwave. Temperature, try your temperature between 145 to 150. After baking, let them cool down for 10-15 minutes. उसके बाद you have to store them. कौन सा oven? My oven is not used to it. Dakshita, let me just repeat the whole thing in Hindi also. So अभी हम लोगों ने ये देख लिया कि आपको कैसे अपना उसको बैटर को पूरा बनाना है. अब हम ये सीखेंगे कि आप उसको बेक कैसे करोगे. जब आप बेक कर रहे हैं एंड आप ओटीजी में बेक कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आपका टेम्परेचर आपको सबसे पहले तो प्रीहीट करना है. आपको प्रीहीट करने के लिए अपना टेम्परेचर उतना ही रखना है जितने पे आप बेक करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, आपका जो मैक्रोन होता है वो बेसिकली 140 से 160 डिग्रीज के बीच में बेक होता है. अगर आप अभी ऐसे गर्मी और ह्यूमिड के माहौल में बनाएंगे तो अराउंड 140 लगता है, 140 या 145 डिग्रीज पे आप बेक कर सकते हैं. एंड ठंडी में जनरली 160 डिग्रीज होता है. ओके, तो अगर आप अभी बना रहे हैं एंड आपका टेम्परेचर 140 डिग्रीज है तो आप 140 डिग्रीज के लिए आप सबसे पहले अपने अवन को प्रीहीट करेंगे 10 मिनट के लिए. प्रीहीट करने के बाद उसमें अपना मैक्रोन वाला रखिए. 140 डिग्रीज आपका टेम्परेचर रहेगा, दोनों रॉड्स ऑन रहेंगी, आपका फैन ऑन रहेगा एंड आप अपने मिडिल रैक पे रखेंगे ओटीजी एंड उसको आप बेक कर देंगे. अराउंड टाइम आपका लग सकता है 15 to 20 मिनट्स. ओके, अगर आपकी सकता है 8 to 13 मिनट. टाइम इज 8 to 13. 8 to 13 मिनट्स लगेगा आपका बेक होने में. अगर आपके में फैन नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, आप अराउंड 145 डिग्रीज पे ट्राई करिए, आपका बन जाएगा. ओके, विद बोथ योर रॉड्स ऑन. हाँ, दोनों रॉड्स ऑन रहेंगी. ऑल्सो अगर आप बना रहे हो माइक्रोवेव में, ना हमने कभी माइक्रोवेव में बनाया नहीं है, बट अगर आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो माइक्रोवेव में. माइक्रोवेव में भी आपका प्रोसेस सेम रहेगा. आपको अपने उसको हीट करना है, प्री हीट करना है सबसे पहले. अराउंड आपका माइक्रोवेव का टेम्परेचर 140 से 150 डिग्रीज तक रहेगा. ओके, 140 डिग्रीज पे आप उसको प्री हीट करोगे अराउंड 5 to 7 मिनट्स के लिए.
प्रीहीट करने के बाद आप उसको ओवन में माइक्रोवेव में रखो। उसको आप वापस से 140 डिग्री टेम्परेचर लगाइए एंड उसको वापस से आप अराउंड 8 to 13 मिनट्स के लिए बेक कर दीजिए। एंड माइक्रोवेव में जब बना रहे हैं तो कन्वेक्शन मोड पे बेक करेंगे, डायरेक्ट माइक्रोवेव में नहीं बेक करना है, माइक्रोवेव कन्वेक्शन मोड। ओके You bake them for the first 10 minutes. उसके बाद close your OTG, let them sit inside for 8 minutes, and then bring them out. Do not bring them out directly. Okay. How do you use your oven thermometer? Just keep them on the below rods. तो आपकी OTG में 2 rods होती हैं, ऊपर नीचे। नीचे वाले rod के पास आप अपना oven thermometer लगा दो। ठीक है? Okay. We have our macarons on straight. Ashmeet, if you do not have a fan, you can just bake it at 145 degrees. Okay, in your OTG. Okay, the last thing, pricing. No, not actually the last thing, but okay, pricing. So guys, macarons sell expensive because of the tremendous mehnat pichne and the tremendous number of fails you'll have in it. Also, almond flour is expensive. So at the area I stay at 1,500 for 5 macarons. Okay, so please do a area check for your place and then price it accordingly. Okay. Quickly, just 2-3 more things which I'll tell you is 2 fails which most oftenly happen: cracks over your macarons, which may be due to you have not tapped and brought the air out of your macarons, or you have over mixed your meringue. Second, no feed, which means that either you have over rested your macarons or under rested them. Okay? After that, you have a lot of tips, hacks, and all in your PDF. Please see the PDF once. Okay? Also, I have just brought my macarons out. See. ओके मैं अभी बता रही हूँ प्राइसिंग का। सो जो आपके प्राइसिंग होती है मैक्रोन्स की, जनरली मैक्रोन्स एक्सपेंसिव होते हैं क्योंकि उसमें बहुत मेहनत लगती है। आप खुद देख रहे हो कितनी मेहनत लगती है, एंड प्लस उसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं वो भी एक्सपेंसिव होते हैं। जैसे कि जब आप आमंड फ्लावर देखोगे तो वो बहुत महंगा होता है, अराउंड 1,000 या 1,500 रुपए का केजी मिलता है या हाफ केजी मिलता है। सो इतना महंगा होता है, इसीलिए मैक्रोन्स थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। अब बेसिकली आपके मैक्रोन का प्राइस क्या रहेगा, ये इस चीज पे डिपेंड करेगा कि आप कौन से एरिया में हो एंड आप किस क्वालिटी के प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो। तो एक बार प्लीज अपने एरिया में चेक कर लीजिएगा कि आपके मैक्रोन की प्राइसिंग क्या है, एंड देन आप अपनी प्राइसिंग रख सकते हो। नहीं, 1,500 रुपए 5 मैक्रोन का प्राइस नहीं है, 1,500 रुपए 1,500 for 5 macarons is the price we sell out. 1,500 for 5 macarons. Oh my god, that is so expensive. Yeah, because almond flour is expensive for us and it has a lot of fails. So before I perfected my recipe, I remember failing for like 17, 18 times, and at a point of time I just lost it कि नहीं हो रहा है. And also eggless macarons sell expensive than egg ones. So egg ones you can price at 800, 900 also, but eggless ones are much more expensive. Okay, one more thing. Just there was just one thing I forgot to repeat. Okay, so आपके 2 तरीके के फेल्स हो सकते हैं, मेजर फेल्स हो सकते हैं 2 तरीके के जब आप बना रहे होगे मैक्रोन्स। एक होगा कि आपको ऊपर की तरफ आपके मैक्रोन्स जो होंगे वो क्रैक हो जाएंगे। वो क्रैक इसलिए हो जा रहे हैं, उसके 2 रीजन हो सकते हैं। या तो आपने उसमें से अच्छे से एयर बबल्स नहीं रिड्यूस किए हैं, और या तो फिर आपने अपना जो बैटर है उसको बहुत ज्यादा मिक्स कर दिया है, इस वजह से वो ऊपर से क्रैक हो गए। दूसरा क्या होता है कि अगर आप अपने मैक्रोन का मतलब बार बार ऐसे खोल खोल के चेक कर रहे हो कि हुआ नहीं हुआ हुआ नहीं हुआ, तो उससे भी आपका मैक्रोन खराब हो जाएगा। तो ये 2 चीजें मत करिएगा।
और बाकी और भी कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें हैं तो PDF में मेंशन्ड है, आप वहां पे चेक कर सकते हैं. Yeah. So again, I told this that you have to check for the prices. The minimum price I have seen Macarons selling for is like 75, 80. People also sell for that much amount. I have students selling for that amount. So yes, you can also do that, guys. Please check for the pricing in your area. Okay, I stay in Delhi, and in here people do spend this much. So you have to adjust your prices according to the area you are staying at. Okay. So this is the macaron in which we hadn't sold. Can you see this excess now? ये दिख रहा है excess part यहाँ पे जिसका swirl नहीं करा था हमने, एक macaron को swirl नहीं करा था. This is what happens if you don't swirl your macarons. Okay, but I do have a perfect feet. Can you see the feet? लक्षित अगर हल्का सा पीछे जाओगे ना, अभी थोड़ा सा वो ब्लर हो रहा है. एक सेकंड, अभी देखिए. यार बहुत लाइट है मेरा, कम लाइट चाहिए मेरे को. अभी दिख रहा है. अभी आप ऐसे साइड से अगर हाथ लगा दोगे ना तो वो आ जाएगा. नहीं, दूसरे साइड से. एक सेकंड. नहीं आ रहा. Probably now. हाँ, अभी थोड़ा सही है. Okay. So can you see these feet which have developed? So अभी आपको ये साइड में दिख रहा होगा ना, एकदम मस्त ऐसे लग रहा है कि हाँ वो ऐसे ऊपर की तरफ उभर आया है, ऐसे कहते हैं फीट्स. तो ये फीट्स आप देख लो बिल्कुल परफेक्ट आया है. तो ऐसे होते हैं आपके मैक्रॉन्स. अभी we have feet in almost, not almost, in all our macarons, right? So we'll take these two. अभी इसके बीच में we need to put something. So for putting we have a ganache. I prefer using a 2:1 ganache, guys. So I'll just use a 2:1 ganache. You can use like any buttercream, frosting, curd, कुछ भी जो use करना है वो कर लो. Also, if you're using buttercream, don't use spoon, use piping bag. Okay, so अभी हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं अपना गनाश. जो गनाश है वो 2:1 रेशियो का है. 2:1 रेशियो का मतलब होता है कि आप जितना अपना वो लेंगे, चॉकलेट लेंगे, चॉकलेट कंपाउंड लेंगे, उसका जस्ट हाफ आप लेंगे फ्रेश क्रीम. उसको अपना या तो आप डबल बॉयलर में बॉईल वो कर लीजिए, मेल्ट कर लीजिए, या तो फिर माइक्रोवेव में रख के मेल्ट कर लीजिए. एंड देन बस उसको ठंडा कर लीजिए एंड अपने माइक्रोन्स में डाल दीजिए. So we have this macaron ready. This is Can so you see nice. this? Okay. Again, I'll just repeat this, guys. Please do not get disheartened if your first few tries are a fail. Okay. Please experiment with the temperature in your OTG. Please experiment with the resting time. Change it according to the weather conditions changing outside. All these things is what makes macarons expensive. क्योंकि आज 160 पे बन रहा है, पता चला कल बारिश हो गई. Okay, somebody is gonna kidnap me if this fails. I'm afraid right now. Okay, but हाँ, I'm gonna take a picture then, and उसके बाद I'll keep an eye कि who is kidnapping you so that I can come there and learn more things. हाँ, so Pankhuri, please take care of this. आगे की sessions हो सकता है मैं ना कर पाऊँ क्योंकि I'm gonna get kidnapped. Okay, okay, हाँ, ये भी so if I break open this macaron, can you see this is not hollow? अच्छे से filled up है, खाली नहीं है बीच में से. Right? So we know that the recipe is working. The only thing now what is needed is you guys trying it at least 7-8 times, finding the perfect temperature for yourself and finding the perfect resting time for yourself. Okay? And आज बन गया, परसों फेल हो गया क्योंकि परसों बारिश हो गई. Again that will have to change. Okay, so bake it once in summer, once in rainy season, and once in winter season, and note down those timings and temperature settings for you. Temperature will always be between 145
to 160, 140 to 160. Okay. So there was one question जो बहुत देर से आ रहा है. So somebody is asking कि where was it? Yeah. Arey Brinda, don't worry. We will be taking your question. We were teaching, इसलिए we were not taking it. Okay. So there are two questions that are coming a lot. One is that what is the difference between OTG and oven, and which one is better to take? And there was one more question. We'll first answer this and then take the another one. Okay, so OTG is oven tandoor grill. Oven is a pure oven. It does not have a tandoor and a grill. If you're baking at home, oven tandoor grill is perfect to be used. If you have a proper cake shop, cafe or something, use an oven. Or if you have a big pura ghar ke size ka home bakery, use an oven. इनसा Okay. गैस पे नहीं बन सकता. Okay, there was one more question, that how do you know that your macarons are properly baked? Once they develop the feet and once the macarons are not jiggly. So abhi if you see ऊपर से और साइड से फीट हो गए हैं, ऊपर से जिगल अप नहीं हो रहे हैं, तो आएंगे. Before removing from your parchment sheet, let your macarons bake. Stay there for 10 minutes, then remove from the parchment sheet. मैं इंस्टा आईडी अभी दे रही हूँ गाइस, दे रही है सलोनी, अभी दे देगी इंस्टा आईडी. अच्छा, just 1 second, I will repeat it in Hindi too. तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके मैक्रोन्स बिल्कुल परफेक्टली बेक हो गए? उसको पता करने के दो तरीके हैं. पहला कि जब आप अपने मैक्रोन्स को देखेंगे तो ऊपर के साइड से वो ऐसे आपको जेली जेली जैसा, मतलब जैसे आपने देखा होगा ना कि अगर कुछ पकता नहीं है तो बहुत ज्यादा ऐसे एकदम जेली जेली जैसा होता है, वैसा नहीं रहेगा, एकदम प्रॉपर शेल जैसा बेक हो चुका होगा वो. ओके. एंड दूसरा, आपको साइड में जैसे अभी दिखाया था ना दक्षता ने, में वो फीट्स जैसे डेवलप हो जाते हैं. फीट्स यानी कि वो ऐसे जैसे आपको देख के लगेगा जैसे 2 लेयर्स टाइप का, एक छोटा छोटा वैसा करके दिखेगा. अभी दक्षता जब पिक्चर शेयर करेंगी ना ग्रुप में, तो आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा कि वो कैसा दिखता है. तो वो वैसे दिखने लगेगा, इसका मतलब है कि एकदम परफेक्ट है. ओके. Cool. There is one more question, that how do we store the aquafaba? You store this aquafaba in fridge for 7 days. Reduce up aquafaba in fridge for 7 days. Okay, I've just come to a room because it's super hot and I'm super tired from taking the entire macaron session. Yeah. Okay. What is aquafaba? Aquafaba is chickpea water. Okay, we sure will try to come up with an egg-based macaron also. And now, if you want to learn how to make aquafaba, or you want to learn how to make the almond flour, you are going to find both the recipes on Dakshata's Instagram ID, and I will tell you where to find her Instagram. Okay. आपको aquafaba और घर पे जो आपको almond flour बनाना है, उन दोनों की रेसिपी आपको मिल जाएगी दक्षता के इंस्टाग्राम आईडी पे. एंड दक्षता की इंस्टाग्राम आईडी कहाँ मिलेगी, मैं अभी आपको बता रही हूँ. ओके. So yes, I think we are already over time. I have to take one more session. So now whatever questions are left, we will be taking all the questions in the course group. So yes, I will quickly share my screen and will show you that where you can find your PDF, where you can find the recordings, where all the products are listed, and where you will find Dakshata's Instagram ID. Okay. So अभी जो भी क्वेश्चंस बच्चे हैं थोड़े बहुत, वो हम लेंगे अपने कोर्स ग्रुप में. और मैं जल्दी से आपको दिखा देती हूँ कि PDF एंड इंस्टाग्राम आईडी, रिकॉर्डिंग्स, ये सब कुछ आपको कहाँ पे मिल जाएगा. ओके. आपको इस पूरी रेसिपी जो आप अगर जो लिखा हुआ है PDF में, वो पूरा अगर आप बना रहे हो तो आपको 12 to 13 shells मिल जाएंगे. आप शेयर कर लो जब तक सलोनी. You can just share your screen by then. Okay. So you can make at least 13 or 12 shells out of this. And yes, there's an option of making without aquafaba, which is using protein starch. And that's a separate recipe. If you want to learn it, we might come up with a session for same. Okay. So I hope everybody can see my screen right now.
Yep. Okay. So what you're going to do is you're first going to open your Pankhuri app. आप सबसे पहले अपना Pankhuri app open करेंगे. Once you will open your Pankhuri app, you will be able to see 3 lines at the bottom of the app. आपको ऐप में सबसे नीचे 3 लाइंस दिख जाएंगी. Click on those 3 lines. उन 3 लाइंस पे क्लिक करिए. You will find an option called as orders and bookings. आपको orders and bookings का एक option मिलेगा, उस पे क्लिक करिए. Once you will click on orders and bookings, you will be able to see your course there. आप जैसे ही अपने orders and bookings पे क्लिक करेंगे, आपको आपका कोर्स दिख जाएगा. Just click on your course. अपने कोर्स पे क्लिक करिए. When you will click on download certificate, you will be able to download your certificate. Certificate download करने के लिए आप download certificate पे click कर सकते हैं. For asking all your question and queries, you can just click on go to course group and you will be able to ask all your question and queries here and they will be answered by the team and by Dakshata. Okay. आपको अगर कोई भी क्वेश्चन और क्वेरी होता है तो आप गो टू कोर्स ग्रुप में जाकर के पूछ सकते हैं एंड आपको यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा. आप टीम भी आंसर करेगी प्लस दक्षता भी आंसर करेंगी तो आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे. After that, for the recordings, you are just going to click on view recordings and you will be able to watch the recording and you're going to have lifetime access to it. So don't worry about it. Okay. Next, आपको recordings के लिए क्या करना है कि आप view recordings पे click करके recordings देख सकते हैं. But याद रखिएगा recordings रात में 9 बजे तक upload होती हैं तो please 9 बजे तक wait कर लीजिएगा. And आपकी जो recordings है वो lifetime के लिए रहेंगी तो आप जब चाहें जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं. Remember guys, the recordings are uploaded on the app by 9 p.m. So please try to watch by 9 only. After that, for the PDF, you're just going to click on masterclass notes and you will be able to find the PDF here. PDF के लिए आप ऐसे masterclass notes पे click करेंगे and then आपको यहाँ पे पूरा का पूरा PDF जो है वो मिल जाएगा Macarons का. Okay. So this is about the PDF. Next for the products, all the products. Oh, okay. All the products are also mentioned here. सारे के सारे products भी यहाँ पे mention हैं. So if in case you want to buy the products, you can just click here and you will be able to buy them all. Okay. सारे के सारे products जो हैं वो यहाँ पे mentioned हैं. आप easily यहाँ पे click करके उनको buy कर सकते हैं. Now for Dakshata's Instagram ID, you're just going to click on Dakshata's picture like this and you will be able to see her Instagram ID right mentioned here. Okay. You can also follow her on Pankhuri app because you can see she keeps on posting all of these beautiful things and yeah. So Dakshata की Instagram ID के लिए आप बस दक्षता को ऐसे दक्षता की जो पिक्चर है उसके ऊपर क्लिक करिए. आपको पूरा उनका Instagram ID मिल जाएगा एंड आप यहाँ पे उनको Instagram पे मिल जाएगा प्लस आप उनको पंखुरी ऐप पे भी फॉलो कर सकते हैं. ओके. Perfect. But there's one small confusion going around. Guys, protein, aquafaba, even if you're buying it from market, you have to reduce Dakshata? it. Huh? We can just eat it. No, I was just asking कि जब मैंने screen share की थी, everything was audible and I was able to get. Audible and visible, right? हाँ. So aquafaba market से लिए तो भी reduce करोगे, घर पे बनाया है तो वो ऑलरेडी रिड्यूस्ड होगा, बॉईल करके बनाया होगा एंड प्रोटीन स्टार्च वाले और ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं. Aquafaba is the cheapest of all. Okay, and one last thing guys, if you all have liked the session, please go on Google Play Store and rate us. Like please do it guys. Yep. So I'll be looking forward to hear a lot of reviews from you guys on Play Store for Pankhuri and on my Instagram, a lot of followers and a lot of reviews. कि कैसा लगा and so right, followers and reviews both. I need both of them. Okay. Yeah, Dakshita wants followers and we want reviews. तो आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे around like I can see around 800 लोग हैं. मुझे at least 600 reviews चाहिए. मुझे अगर 600 reviews नहीं मिले ना, मैंने बताना मैं क्या ही करूँगी मैं, but please यार कर दो. It will just take 5 minutes of yours. Okay, it will just take 5 minutes and it will be
it will be so much grateful for us. So please go on Absolutely. Google Play Store and rate us. तो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, हमें रेट करिए, बिकॉज वो बहुत ज्यादा मैटर करता है. वो सिर्फ 5 मिनट लगेगा आपको, आई थिंक 5 मिनट भी नहीं लगेगा, 2 मिनट लगेगा. प्लीज 2 मिनट निकाल लो यार हमारे लिए, इतना कर दो प्लीज. Absolutely. Thank you, Zara. So she was in our brownie session also, and she has made it, and she has written, "Ma'am, your brownies rock." Thank you. Dakshita rocks, all her recipes rock. Thank you. Thank you so much, guys, for joining in. I am expecting a lot of reviews, followers, and a review on my Insta page as well. Thank you. And yes, the name is the Recipe Rounder. Yes, Recipe Rounder करके ही नाम है Instagram पे. Thank you. So yes, guys, I hope to see you all in some other courses. I hope that you are going to follow Dakshita. You are going to give us great reviews on Google Play Store. And I hope that you are going to join us in all the other courses. So yes, and Dakshita ka, there is one more course coming called as tea cakes, right? Tea time cakes. हाँ. Yes, guys, Dakshita का tea time cakes भी आ रहा है, तो आप हमको वहां पे भी ज्वाइन कर सकते हैं बहुत जल्दी. एंड उसमें दक्षिता बहुत सही सही केक सिखाने वाली है. आई होप मैं वापस से उसकी होस्ट बन जाऊं. Okay. So yes, guys, we have also shared the link with you. You can just click on that link and you will be able to rate us on Google Play Store. You will be able to rate us on Google Reviews, and it will be great for us. Okay. Perfect. Okay. So yes, guys, bye, and I hope to see you all in some other courses. Okay. Bye bye. Bye.